everyone. So today we're going to start a new chapter, and the name of the chapter is Frankenstein's creation. Let's start the chapter. Chapter 13, Frankenstein's creation. Theme stream. Can you think of examples where science has been harmful for mankind instead of being helpful? तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपने कभी सुने होंगे जहाँ पर साइंस आपके लिए हेल्पफुल ना होकर हार्मफुल हो. स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम मैरी शेलीज फ्रैंकस्टन, जहाँ पर एक्सप्लोरर रॉबर्ट वॉल्टन ने लिखा एक सीरीज ऑफ लेटर्स टू हिज सिस्टर इन इंग्लैंड में वो रिटेल करता है विक्टर फ्रैंकस्टाइन्स ट्रैजिक स्टोरी. फ्रैंकस्टाइन एक ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट था जिसने एक लिविंग बीइंग क्रिएट किया, क्रिएट्स अ लिविंग बीइंग बाय ब्रिंगिंग अ डेड बॉडी को लाइफ डाल दी थी उसके अंदर. However, Frankenstein is horrified by his appearance and abandons him. Characters in spotlight: Victor Frankenstein, a brilliant scientist who creates life but is horrified by his own creation. His ambition leads to tragedy and loss in it. The monster, Victor's creation, abandoned and despised for his hideous appearance. He seeks companionship and revenge for the pain caused by his creator. William Frankenstein, Victor's youngest brother, whose murder triggers Victor's pursuit of the monster and deepens the tragedy in the Frankenstein family. Henry Clover, Victor's loyal and kind-hearted friend who supports him but becomes a victim. The monster's vengeance. Victor's father, a caring and honorable man who supports his family in times of death, grief, and tragedies, providing a moral anchor for Victor. The monster's bride proposed, a female companion demanded by the monster but never created, representing the monster's hope for happiness and of further desire. The quest begins. It was on the dreary night, जब नवंबर की बात है, that I saw, वो मैंने देखा वो चीजें जो मैंने पूरे 2 साल की मेहनत में किया. बहुत ही ग्रेट एंजाइटी के साथ मैंने इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्ट करे ऑफ लाइफ अराउंड मी टू इन्फ्यूज द स्पार्क ऑफ बीइंग इनटू द लाइफलेस थिंग दैट ले एट माय, कि एक लाइफलेस बॉडी के अंदर मैंने लाइफ डाली. आई सॉ द डल येलो आई, क्रिएचर की देखी वो खुली हुई, इट ब्रेड हार्ड, वो सांसें ले रहा था और उसके जो लिम्स थे वो झटके ले रहे थे इन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट बिकॉज द बॉडी इज ऑलरेडी डेड एंड बाय आर्टिफिशियल तरीके से उसने by artificial means he has just put the life in that dead body. So the reactions which has come out, that is different. How do I describe the wretch I had created with such pain? मैंने ये सब चीजें कैसे क्रिएट करी, मैं उसे कैसे डिस्क्राइब करूं. His जो skin थी, he had yellow skin which barely covered with work of muscles they covered in arteries beneath. His hair was lustrous black and flowing. Teeth had a pearly whiteness था and watery eyes जो थी were set in dun white sockets. However, now horror and disgust से उसका हाथ, क्योंकि डेड बॉडी जब लाइव हो जाती है वो भी नॉर्मल तरीके से, तो डर तो लग रहा है, हॉरर की फीलिंग आने लगी उसको. अनेबल टू लुक एट द क्रिएचर पे वो देख, जो खुद ही बनाया खुद ही उसको देख नहीं पा रहा था, रूम से चला गया. आई ट्राई टू स्लीप इन माई रूम, जाकर अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहा था, बट स्टार्टेड अप डिस्टर्ब माई आई ड्रीम्स. बाय द डिम एंड येलो लाइट ऑफ द मून आई सॉ द मिजरेबल मॉन्स्टर. जैसे ही वो जो हल्की सी मून की रोशनी आ रही थी उसमें उसे वो मॉन्स्टर बार बार दिखाई दे रहा था. ही वॉज होल्डिंग अप द कर्टन्स ऑफ द बेड. ऐसा लगा था कि वो कर्टन्स को होल्ड कर रहा है और उसकी आईज जो है वो मेरी तरफ ही मुझे देख रही है. He might have spoken on one head stretched out to hold me back, but I escaped and rushed downstairs. मैं छुप भागा वहां से downstairs. I took refuge in the courtyard. मैं कोर्टयार्ड में जाकर रहा एंड वहां पे ही नाइट गुजारी रात को. तो मॉर्निंग में मैंने देखा कि हाउस जो है वो एम्प्टी है ऑफ द क्रिएचर. बहुत सारे फॉर सेवरल मंथ्स आफ्टरवर्ड मैं बेड पे ही रहा, मेरे को नर्वस फीवर हो गया था. देन अ लेटर फ्रॉम माय फादर, मेरे पास मेरे फादर से लेटर आया, मेरे को बताया कि मेरा यंगेस्ट ब्रदर विलियम हैड बीन फाउंड मर्डर्ड, कि उसका मर्डर हो चुका. आई न्यू आई हैड टू रिटर्न होम इमीडिएटली, तो मुझे पता था कि मुझे वापस घर जाना होगा. वॉज कम्प्लीटली रात हो गई थी जब मैं जिनेवा में पहुंचा. गेट्स जो थे टाउन के शट थे एंड आई वॉज, मुझे फोर्स किया गया टू पास द नाइट एट अ विलेज आउटसाइड. मुझे पता था मुझे गांव के रास्ते से जाना है एंड देयर द डार्क हो रहा है, बहुत अंधेरा हो रहा है. अब तूफान भी आ रहा था माउंटेन्स में, सो आई वंडर्ड हाउ टू वॉच इट. विद लिटिल कंसर्न फॉर माय सेफ्टी डिसाइडेड टू विजिट द स्पॉट वेयर पुअर विलियम हैड बीन मर्डर्ड. तो अपनी सेफ्टी का बहुत ही कम ध्यान रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस जगह पर जाऊं जहां पर पुअर विलियम का मर्डर हुआ था. सडनली डार्कनेस में मैंने एक फिगर देखा लर्किंग बिहाइंड द क्लम्प ऑफ ट्रीज नियर मी. पेड़ के पास से कोई देख रहा हो, जैसे फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, एकदम जैसे जब थंडरस्टॉर्म आता है जो लाइटनिंग होती है उस थोड़ी सी जब पड़ी स्काई के अंदर, तो एक जायगेंटिक और डिफॉर्म शेप जो है क्रिएचर की उसको दिखाई पड़ी सी. इट वॉज द रेच हुम आई बेड ब्रॉट टू लाइफ.
लगा था कि ये वही है जिसको मैंने जिंदा किया था। व्हाट वाज ही डूइंग, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये मेरे ब्रदर का मर्डरर है? आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ इट द मोमेंट आई थॉट एंटर्ड माई माइंड। मैं कन्विंस्ड हुआ ऑफ इट मोमेंट जब मैंने सोचा, एंटर्ड माई माइंड। क्रिएचर passed me quickly and I lost him in the gloom. I thought of following him, but another flash showed him hanging among the rocks. With unnatural speed, उसने वो कहाँ पहुंचा? Summit of the mountain and disappear हो गया। मैं अपने फादर के घर पहुंचा 5 in the morning। इट वॉज अ हाउस इन मॉर्निंग, सब शोक में थे। उस टाइम से अब तक आई लिव्ड इन डेली, मेरे को मॉन्स्टर्स का डर बैठ गया था। और उसी टाइम पे मैंने आई वांटेड टू, मैं उसे दोबारा भी देखना चाहता था ताकि टू अवेंज द डेथ की, विलियम की डेथ कैसे हुई। तो माय विश सून ग्रांट हो गई। एक दिन आई वाज वंडरिंग ऑफ अलोन वैली ऑफ Chamonix एंड वाज रेस्टिंग अलोंग माउंटेन के साइड में आई वाज रेस्टिंग, जब मैंने देखा एक मैन जो था वो मेरी तरफ आ रहा था ओवर द क्रिवाइसेस इन द आईज एट सुपर ह्यूमन स्पीड। वो मॉन्स्टर था और उसका फेस फिल्ड था विद बिटर एंग्विश। Be gone, exclaimed, or rather stay, that I may turn you to dust. I expected this reception, said the monster. All men hate the wretch. I must be the most hated of them all. But if you agree to my conditions, I will leave the world of men and you ask me. ताकि अगर तुम मेरी कंडीशंस को समझते हो, उसने कहा, मॉन्स्टर ने बोला कि जितने भी मेन हैं दे हेट द वेच, नफरत करते हैं। तो मैं मोस्ट हेटेड होगा सब में से। लेकिन अगर तुम एग्री करते हो मेरी कंडीशन के, तो मैं वर्ल्ड ऑफ मेन में चला जाऊंगा, लीड छोड़ दूंगा और तुम्हें यू विल बी एट पीस। एंड अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो प्रिपेयर रहो आपके बचे हुए जो तुम्हारे लव्ड वंस हैं डेथ के। मैं डर गया था लेकिन वो कंटिन्यू बोलता रहा, हैव आई नॉट सफर्ड इनफ, रिमेंबर दैट आई एम योर क्रिएचर। देखा, याद रखो कि मैं तुम्हारा क्रिएचर हूँ। ऑल अराउंड मी आई सी हैप्पीनेस बट आई एम एक्सक्लूडेड फ्रॉम। मैं हैप्पीनेस को आई कैन सी बट मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। आई वॉज कंपैशनेट बट मिजरी मेड मी अ डेमन। आई हैव हेल्प पीपल, मैंने बहुत लोगों की मदद करी, मैंने लोगों की जान बचाई जब वो मुसीबत में थे। बट आई हैव बीन स्टोन्ड एंड शॉट एट इन रिटर्न, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिला? मुझे लोगों ने मारा, मेरे को पत्थरों से भी मारा और वैसे मुझे शॉट कर। तो डेजर्ट माउंटेन्स और कलरलेस ग्लेशियर्स जो थे वो वही अब उसके रिफ्यूज थे, वो वही रहता था। ओनली ब्लीक स्काई इज काइंड टू मी, लिसन टू मी फ्रैंकस्टन, आई एम अलोन एंड मिजरेबल एंड ओनली वन जो मेरे लाइक माई सेल्फ मेरा लॉयल कंपेनियन है। मस्त तुम्हें एक वुमेन क्रिएट करनी चाहिए मेरे लिए जो मेरी ब्राइड बने। कट ऑफ फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड से कट ऑफ कर दो, वी शैल बी अटैच टू वन अनदर। आवर लाइफ्स माइट नॉट बी हैप्पी, हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी बट दे विल बी हार्मलेस तो होगी। यू शैल नेवर सी अस अगेन, तुम हमें दोबारा नहीं देखोगे। हम यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर साउथ अमेरिका एंड माई लाइफ विल फ्लो वहीं क्वाइट। आई पिटीड हिम। तब मुझे पर तरस आया और मैंने रिप्लाई किया, एग्री, मैं तुम्हारी डिमांड को एग्री करता हूँ बट ओनली तुम्हारे सोलम प्रॉमिस के ऊपर कि तुम यूरोप को यहाँ से हमेशा के लिए उसके बाद छोड़ दो। आई स्वेयर, वो रोने लगा। गो होम एंड स्टार्ट वर्किंग, आई शेल वॉच द प्रोग्रेस विद एंजाइटी। सेइंग दिस ही लेफ्ट, ये कहकर वो चला जाता है कि मैं करता हूँ इस पर। आई लेफ्ट फॉर इंग्लैंड विद माई फ्रेंड हेनरी क्लेवरर, के साथ मैं इंग्लैंड के लिए निकल गया। हम पार्टेड हुए स्कॉटलैंड में। आई कंटिन्यू ऑन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्मिकी आइलैंड, जहाँ पर आई वुड वर्क टू क्रिएट अ ब्राइड, मुझे उस क्रिएचर के लिए क्रिएट करना। 3 years ago, I had created a friend and was now about to create another, क्रिएट करने में लगा था। I did not know कि किस तरह का पर्सन वो she would be. So he had sworn to leave human society and hide himself, अपने आप को उसने रिमोट डेजर्ट्स में हाइड कर लिया, बट शी हैड नॉट, उसने नहीं किया। इवन इफ दे वर टू लीव यूरोप, अगर उन्हें यूरोप छोड़ना पड़ा, द चाइल्ड चिल्ड्रन माइट पैराडाइज। आई वॉज अलॉन ऑन सॉलिटरी आइलैंड में अकेला था जब मॉन्स्टर दैट आई ड्रेडेड वो अपीयर हुआ। बाय देन माई माइंड मेड अप आई वुड नेवर क्रिएट अनदर लाइक हिम, कि मेरा तब दिमाग में ये था कि मैं इसके ऐसा कोई दोबारा नहीं बनाऊंगा। ही गॉन, मैं रोने लगा। अब ब्रेक, मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं एक बीइंग कभी क्रिएट नहीं कर सकता तुम्हारी तरह इन विकेडनेस। मॉन्स्टर gnashed his teeth in anger, गुस्से में उसके दांत तोड़ दिए। Will every man find a wife for himself and each beast have his mate and ideal, उन सबकी जितने भी मैन है उनकी वाइफ होगी, हर किसी के पास जो बीस्ट के पास मेट होगी, तो मैं क्या अकेला रहूंगा? आई हैड, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, अफेक्शन है, एंड दे वर रिटर्न बाय द हेट्रेड एंड स्कॉन। आई एम लीविंग नाउ एज यू आस्क बट रिमेंबर आई ऑलवेज बी विद यू। मैं आज छोड़ रहा हूँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ आई ऑलवेज विद यू। आई रश्ड फॉरवर्ड टू स्टॉप हिम, मैं आगे बढ़ा उसे रोकने के लिए, बट उसने बहुत ही स्पीड से वो घर छोड़ दिया अपनी टेरिबल थ्रेट को देकर। आई सॉ हिम सेल अवे इन अ बोट विच शॉट अक्रॉस द वाटर्स।
with the swiftness of an arrow. Next day, I set off to rejoin Clerval and return home, but I never saw my friend. Then कभी उसने नहीं देखा. Monster had taken his उसकी भी life ले ली थी, and as I found, for a time I was put in prison में मुझे डाल दिया गया on suspicion of the crime. So on my release, I returned to Geneva to watch over those eyes. Fun fact: Mary Shelley, the author of the Frankenstein, was inspired to write the story during a stormy summer in 1860 at Lake Geneva, Switzerland. This event is now called the Year Without a Summer due to volcanic eruption. Let's do the vocabulary word: dreary, dull, toil, hard work, useful, someone with an emotion or quality, wretch, durable creature, lustrous, shiny and glossy, dull white of a dull white color, refuge, shelter, raging, continuing with great force, lurking, lying in wait, hiding, plump, small group of plants growing together, gigantic, huge, mourning or grief, avenge, take revenge for, Chemnitz, a town of eastern France at the foot of Mont Blanc, major center for skiing and mountaineering. Devices, narrow openings or cracks, especially in a rock or wall. Anguish, pain, and suffering, begone, go away, an expression of annoyance or anger. Turn you to dust here, destroy or completely reception, welcome. Wretched, here, inferior or worthless. Glacier, slowly moving mass of ice originating accumulation. Bleak, cold, and empty. Vast, pensive, solemn, sincere, or honest. Remotest, most isolated. Defiant, demon. Sworn, promised. Solitary, lonely, a place set apart from others. Smashed as a ground or grated, scorn, contempt, to be ridiculed in a disrespectful manner, delivering here, conveying swiftness, speed, suspicion, doubt. Let's engage and evaluate. Let's do the true and false. Monster murders William Frankston out of anger and revenge. Victor agrees to create a bride for the monster on the condition that they leave Europe. True. Victor feels guilt and responsibility for the consequences of his creation throughout the story. True. Henry Clerval travels with Victor to the Orkney Islands to help him create the bride for. Through the fill in the blanks. Victor Frankston creates a being from dead matter, but is horrified when it comes to life. Henry Clevel accompanies Victor on his journey to England, but stays behind in Scotland. The monster confronts Victor in the valley of Chamonix for plead for a company. When Victor sees the dash monster for the first time, it is under the light of the moon. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. The exercises. Bye bye. Take